Good morning. Myself, I am Musa Sheikh, Zoology faculty. Yesterday, in last session, we discussed on muscle and types of muscles. And now, second video on locomotion and movement. In this video, we will going to be discuss about the structure of a muscle. So muscle is a specialized tissue. It is a specialized tissue. Muscle is considered as a specialized tissue, and muscle is mesodermal in origin. Right? Very important for need purpose. It is said as muscle is a mesodermal in origin. क्या बोलेंगे इसको? Muscle कौन से germinate से प्रोड्यूस होगा? Right? So in human embryo तीन टाइप के germinates होंगे. Ectoderm, mesoderm, endoderm. तीन germinates है. Ectoderm, mesoderm, endoderm. ये germinates का फंक्शन क्या होगा? These are going to be forming the body parts. Okay. Ectoderm से some body parts का formation होगा, like epithelial organs. Mesoderm से some body parts का origin होगा, like muscles. Okay. And endoderm से some body parts का production होगा, like internal organs. So like that, क्या बोलेंगे? These muscles are the mesodermal in origin. Very important. Then after that we can say 40% to 50% of body weight can be contributed by muscles only. Okay, ह्यूमन बॉडी का जितना भी वेट है उसमें से 40% से 50%. ओके, 40% to 50% ऑफ द बॉडी वेट contributed by the muscles only. Right? Important for the competitive examinations. Then we can say in human body approximately number of muscles in human 639. ओके, ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होंगे? 639 मसल्स होंगे. ओके, नंबर ऑफ द मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर द 639, एंड द सेल्स which are making the muscles are called as the myocytes. So muscles are made up of with the specialized cells. Okay, those cells are called as the myocytes. Muscles को बनाने वाले cells को ह्यूमन बॉडी में मसल्स को बनाने वाले सेल्स को मायोसाइट्स बोलेंगे. ये मायोसाइट्स को वी कैन कॉल्ड एज द सार्कोसाइट्स. ओके, मायोसाइट्स आर द सार्कोसाइट्स. दीज सेल्स आर प्रोड्यूसिंग द मसल्स. सो मसल्स आर द प्रोडक्शंस ऑफ द मायोसाइट्स. ओके, राइट, इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. देन वी कैन से स्टडी ऑफ द मसल. Study of the muscle. Study of muscles are called as the myology. Study of the muscles are called as the myology and also called as the sarcology. Right? So इसमें से ओके एग्जैक्टली एक पॉइंट नीट में पूछने वाला है. एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट. राइट? सो मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. दीज आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन. इसका ओरिजिन मेसोडर्म से होगा. एंड ह्यूमन बॉडी के कंप्लीट टोटल वेट में 40% से 50% of the human weight is contributed by the muscles only.
right? Then human case, okay, number of the muscles are 639, right? So कभी कभी 640 भी देगा राउंड फिगर बना के, but exact number of the muscle in the body is 639, and the cells which are making the muscles are called as the myocytes. These myocytes also called as the sarcocytes, and study of the muscle is called as the myology, and it is also called as the sarcology. Next, properties of muscle. Properties of muscle. So qualities of muscle, characters of muscle. Okay, muscles के 4 specific characters होंगे. First property of the muscle is excitability. First character of the muscle is excitability. And second property of the muscle is contractibility. Okay, contractibility. And third character of the muscle, we can say relaxation. And fourth property of the muscle is we can say that is the elasticity. Okay, elastic nature, that is the elasticity. These are the 4 properties of the muscles. Muscles के 4 properties होंगे. First is the excitability, right? So muscle का main character ये होगा contraction and relaxation. For example से अब मैं hand को move करना है, right? So hand क्या होगा? Contract, relax. Okay, these are the main properties of the muscle. Okay, so ये contract relax होने के लिए this muscle should be excite होना चाहिए and इसको elasticity भी होना चाहिए. Okay, so here we can say these 4 are the main characters of the muscles, are the main properties of the muscles. First one is the excitability, second one is the contractibility, third one will be the relaxation, fourth one is the elasticity. Okay, these are the 4 characters of the muscle, and these are the like about the muscle. क्या है? These are the specialized tissues. Okay, याद रखना है exactly. Mesodermal in origin. Tissues are mesoderm से इनका origin होगा. And इसके ऊपर क्वेश्चन कई मर्तबा पूछा है. Okay, the contribution, the weight contribution by the muscles in the human body, that is the 40% to 50%, and number of the muscles are the 639, and the cells which are making the muscles are the myocytes, and study of the muscle is called as the myology. Okay, very important, myology, study of the muscle. And next we are going to discuss about the structure of the muscle. Discussing about the muscle structure, right? So we can say muscle right. So एक मानिए मसल, बाइसेप मसल का एग्जांपल लेते हैं. आफ्टर ट्राइसेप मसल, ऑल मसल्स विल बी लाइक सेम स्ट्रक्चर में रहेंगे. सो इट इज ए मसल, राइट. सो मसल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मसल बंडल्स. ओके, मसल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द मसल बंडल. मसल कैसे बनेगा? एक ग्रुप ऑफ मसल बंडल्स are making the muscle. Okay, so we can say it is a muscle is a group of muscle bundles like this. Okay, number of muscle bundles are there here. Okay, so देखिए इसमें स्वाभाविक muscle is going to be, it is spread with the muscle bundles. Number of
muscle bundles will be there in the muscle. Like this, muscle bundles. So total muscle, entire muscle is a, right? It is contributed by the muscle bundle. Okay, muscle bundle. So we can write here muscle. Okay, it is a group of muscle bundles. Right? So these all are we can call as the muscle bundles. This muscle bundles also called as the fascicles. क्या बोलेंगे इसको? Muscle bundles also called as the fascicles. Okay, these all are the muscle bundles. Okay, number of muscle bundles are there in the throughout the muscle. Muscle जितना भी लंबा होने दो. Okay, so total muscle is it is made with the muscle bundles only. Okay, and these muscle bundles are right made with the specialized fibers. Okay, जो यहाँ पे पिंक कलर में जो डार्ट्स के जैसा दिखा रहा हूं मैं, these all are we can say these are the muscle fibers like this. Okay, this total darts जो यहाँ पे visible हो रहे. Okay, this total darts are muscle fibers. Muscle bundle का combination है. Muscle is a combination of the muscle bundle, and this muscle bundles are okay made with the a group of muscle fibers. Then right here, muscle bundles. Okay, these are a group of muscle fibers. Okay, a total, these all are with the a total like with the this total muscles are made up of with muscle fibers only. Right? So totally muscle bundles किसके combination होंगे? These are the muscle fibers के combination होंगे. Okay, लंबे से लंबे fibers रहेंगे. Those are we can call as the muscle fibers. So we can say muscle bundle is it is a group of the muscle fiber. Okay, entire all the muscle bundles here. Okay, these all are made up of these are the combination of these are the group of the muscle fibers only. This total we can say made up of the muscle fibers. Okay, so muscle is a group of muscle bundles, and muscle bundle is a right. It is a group of the muscle fiber. So we can say it is the muscle bundle. Muscle bundle को क्या बोलेंगे? Fascicles. Okay, then these one, okay, जो dots है यहाँ पे, these are the muscle fibers. These are the muscle fibers. Now we can see here these muscle bundles are covered with the membrane like this. Each and every muscle bundle is going to be covered with a specialized membrane. Okay, a specialized membrane. All muscle bundles are covered with the specialized membranes. This specialized membrane is called as the fascia. Okay, क्या बोलेंगे इसको? This specialized membrane which is covering on the muscle bundle is called as the fascia. Okay, fascia. Muscle bundles are a combination of the muscle fibers. Okay, and muscle bundles are covered with the specialized membrane which is we can call as the fascia. Okay, so here muscle bundle covered by these are muscle bundles are covered by क्या बोलेंगे? Membrane which is called as the fascia. Okay, so important है याद रखना
muscle is a group of muscle fibers. Okay, these are group of muscle is a group of muscle bundles. Okay, these muscle bundles are group of the muscle fibers, and here we can see these muscle bundles are covered with the specialized membrane, that is we can call as the fascia. याद रखना है इसको. Now we can see, अब देखिए एक मसल फाइबर को, ओके, एक मसल फाइबर को आई विल पुट आउट, आई विल टेक आउट वन मसल फाइबर. ओके, एक मसल फाइबर को बाहर निकाले, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. क्या है ये मसल फाइबर? क्या है? द ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स आर द मसल बंडल्स. मसल बंडल्स, द ग्रुप ऑफ द मसल बंडल्स आर द मसल. सो मसल किससे बना हुआ है? सिंपली मसल फाइबर से बना होगा. ओके, सो वी कैन से एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दैट इज सिंपली विल बी लाइक दिस. क्या है? इट इज द मसल फाइबर. क्या बोलेंगे इसको? इट इज द मसल फाइबर. Muscle fiber. This muscle fiber is going to be covered with a membrane, both the sides, like this. Okay, this muscle fiber is covered with the membrane. This membrane is called as the sarcomere. Very important. Okay, क्या हुआ यहाँ पे? Muscle fiber is covered with a membrane. Okay, this membrane is called as the sarcomere. Okay, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा. Okay, like that. यहाँ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है ये, बट मसल होने के नाते दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज द sarcomere. Okay, so क्या है? मसल फाइबर इज कवर्ड विद द sarcomere. Then after that, inside the muscle fiber ये फ्लूइड इज देयर. जैसे कि सेल्स में साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होगा, लाइक दैट इसके अंदर भी, मसल फाइबर के अंदर भी एक साइटोप्लाज्म है. दिस साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म. इट इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्म. ओके, क्या है सार्कोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म ऑफ द, okay, cytoplasm of the, right, cytoplasm of the muscle fiber is called as the sarcoplasm. Okay, inside the sarcoplasm, इसके अंदर all types of the cellular organelles का प्रेजेंट होगा. किसके अंदर? this sarcoplasm में. ये sarcoplasm में like cells के अंदर जैसे cellular organelles क्या क्या होंगे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स, जैसे जितने भी लाइक सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, दोज ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट आल्सो इन दिस सार्कोप्लाज्म. बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, दैट इज वी कैन कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ऑफ द मसल फाइबर. ओके, इसके अंदर ओके ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, राइट. तो सार्कोप्लाज्म के अंदर ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे स्पेशली एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन करेंगे, दैट इज वी कैन कॉल एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा वही है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ओनली, बट ये मसल में प्रेजेंट होने के नाते दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज कॉल्ड एज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके, सो किस लिए इस चीज के बारे में स्पेशली डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ this sarcoplasmic reticulum is going to be producing the calcium. Okay, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम का प्रोड्यूस होगा, ये कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए. अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा.
ओके, सो मसल कैरेक्टराइज होने के लिए ये कैल्शियम प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाट यहाँ पे स्पेशली इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सो क्या है यहाँ पे मसल फाइबर का ओके स्ट्रक्चर, इट इज द मसल फाइबर इज गोइंग टू बी कवर्ड विथ ए मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज द सार्कोलीमा। ओके, इनसाइड द मसल फाइबर it is having a fluid, okay, which is called as the sarcoplasm. Okay, sarcoplasm. Inside the sarcoplasm, all types of the cellular organelles are there. Okay, including that endoplasmic reticulum में present होगा. That endoplasmic reticulum of the muscle is called as the sarcoplasmic reticulum. Okay, then after I would like to say this right. This myofibril or the muscle fiber is a combination of the myofibrils. Okay, muscle fiber, right? It is a combination of group of myofibrils. ज्यादा myofibrils क्या है यहाँ पे? Muscle is a group of the muscle bundles. Muscle bundles is a group of the मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स किससे बनेंगे? एक ग्रुप ऑफ मायोफिब्रिल्स और कॉल्ड एज द राइट मायोफाइबर। सो मायोफाइब्रिल यहाँ पे जो डार्ट्स ओके जो दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस डार्ट्स आर मायोफिब्रिल्स। ओके, मायोफिब्रिल के कॉम्बिनेशन को वी कैन कॉल एज द मसल फाइबर। द ग्रुप ऑफ द ओके मायोफिब्रिल्स are called as the muscle fiber. So I will take out a myofibril. It is the myofibril. These myofibrils are okay made up of with the cells. Those are called as the myocytes. क्या बोले इसको? It is the myofibril. It is the myofibril, right? These myofibrils are it is made up of with the specialized cells. Those are called as the myocytes. Okay, myocyte क्या है यहाँ पे? See, it is the structure of the muscle, right? So muscle is made up of with a group of muscle bundles. Okay, these muscle bundles are made up of with the okay specialized fibers. Those are called as the muscle fibers. ये सारे डार्ट्स यहाँ पे जो दिखाया हूँ, so these are all dots are we can call as the muscle fibers. Okay, ये डार्ट के जैसे नहीं रहेंगे, these are the fibers, लंबे धागे के जैसे रहेंगे। बट यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि लाइक यहाँ पे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स नहीं दिखा सकते। So these are dots, okay, we can say as the muscle fibers, right? So this muscle bundle is covered with a layer which is called as the fascia. ये लेयर को क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज द फेशिया। फेशिया मीन्स व्हाट मा? द लेयर which is covered the muscle bundle is called as the fascia. Now muscle bundle is a group of muscle fibers, or it is the structure of the muscle fiber. Muscle fiber is covered with the layer which is called as the sarcolemma. Okay, inside the sarcolemma, inside the muscle fiber, okay, fluid is there which is called as the sarcoplasm. Inside the sarcoplasm, cellular organelles will be there. These myofibrils are, we can say, these are the group of combination of the myofibrils. Okay, myofibrils are going to be formed by the myocytes. So, muscle में कौन से structures होंगे? We can see muscle is okay, a combination of the myocytes. Okay, a group of myocytes are called as the myofibrils. Okay, myofibrils are going to be क्या बोलेंगे? A group of myofibrils are called as the muscle fibers. The group of myofibers are going to be formed as the muscle bundles. Okay, the group of muscle bundles we can call as the muscle, right? So muscle किससे बनेगा? The sites, okay, the specialized cells which are forming the muscle is called as the myocytes. The group of myocytes are going to be formed as the myofibrils. The group of myofibrils are going to be formed muscle fibers.
the group of muscle fibers going to be form muscle bundles. The group of muscle bundles are called as the muscle. It is the structure of the muscle. Okay, so now we are going to be discuss about the structure of the myofibril. Okay, very important. Okay, so the structure of the myofibril. Structure of myofibril. Right? So muscle कैसे बना था? What combinations are making the muscle? So muscle is starts with the composing with the specialized cells. Okay, those are called as the myocytes. The group of myocytes we can say those are the myofibrils. Right? The group of myofibrils are going to be formed as the muscle fibers. Okay, the group of muscle fibers are going to be formed muscle bundles. Okay, the group of muscle bundles are called as the muscle. It is the sequence of the formation of the muscle. So muscles are made up of with the special sites called as the myocytes. A group of myocytes are called as the myofibrils. A group of myofibrils are called as the muscle fibers. A group of muscle fibers are called as the muscle bundles. A group of muscle bundles are called as the muscle. So muscle is a group of the muscle bundles. इसका initiation किसे हुआ है? The muscle bundles का initiation starts with the myocytes. Now I am going to discuss on this one. Okay, myofibrils very important for the NEET. Structure of the myofibril. Myofibril का structure. Right? So muscles के ऊपर okay किसका structure देख रहे हैं? myofibril. ये myofibril है. लंबा जितना मसल की लंबाई होगी उतना लंबा myofibrils प्रेजेंट होंगे. On this myofibrils, okay, successive distance में longitudinal lines present होंगे on the successive distance of the myofibril. Some longitudinal lines are appeared. This longitudinal lines on the myofibril is called as the Z lines. Okay, it is called as the Z line. क्या बोलेंगे? myofibril के ऊपर एक successive distance में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस प्रेजेंट होंगे. दिस लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस ऑफ द myofibril इज कॉल्ड एज द जेड लाइन. ओके, इनका कोई काउंट नहीं होगा. जितना myofibril की जितना लंबा होगा उतने लंबे वेट टोटल myofibril इज हैविंग द दिस लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस. दिस लाइंस आर कॉल्ड एज द जेड लाइंस बोलेंगे. सी जेड लाइंस आर देयर. ओके, दो को निकाल लो तो मैं स्ट्रक्चर डिस्कशन के लिए. राइट, सो longitudinal lines on the longitudinal lines on the myofibril, these are called as the Z line. Okay, so Z line किसको बोलेंगे? longitudinal lines on the myofibril. And
distance between, okay, space between the two successive Z lines is called as the sarcomere. जो distance है, okay, जो ये space between the two Z lines, ये दो Z line के बीच में जो भी space है, this space is called as the sarcomere. Okay, क्या बोलेंगे इसको? Sarcomere. Okay, space between the two successive Z lines. Okay, so space between the two successive Z lines is called as the sarcomere. इस स्पेस को sarcomere बोलेंगे. क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. ओके, यहाँ पे लिखेंगे, राइट? सो sarcomere. ओके, क्या है sarcomere? It is the space between, okay, space between two Z lines. Okay, space between two Z lines is called as the sarcomere, right? Then after that, I would like to say, in this sarcomere, okay, in the sarcomere, two types of the filaments will be present. The sarcomere, two types of the filaments. Like this. sarcomere में टू टाइप्स के फिलामेंट्स, ओके, टू टाइप्स के फिलामेंट्स का प्रेजेंट होगा, राइट? सो लाइक दिस like this sarcomere. क्या sarcomere है? sarcomere क्या है? It is the space between the two Z lines. Okay, ये sarcomere में two types of the filaments are there. Okay, two types of the filaments are there. क्या है? In center of the sarcomere, okay, one filament is appeared, जो मैं पिंक कलर से यहाँ पे दिखाया हूँ. In the center of the sarcomere, okay, one filament is there. Okay, ये थोड़ा thick दिख रहा है, right? So, and in the lateral sides of the sarcomere, okay, another protein is there, another filament is there. ये जो lateral sides में है, it is called as the actin filament. Okay, वो actin से बना हुआ है. That is the actin filament, जिसको light band बोलेंगे, light band बोलेंगे. And जो बीच में है, okay, it is called as the myosin filament. It is the myosin filament. Okay, so in sarcomere, two types of the filaments are appeared. Okay, in center of the sarcomere, one thick structure is located. It is, we can call as the myosin filament. And lateral sides of the sarcomere, right, one light, okay, in light colored one filament is appeared, which is we can call as the actin filament. Okay, two filaments हैं. Okay, one is the actin, okay, one is the myosin. Okay, so we can say from here to here. Okay, from here to here, that is we can call as the I band. It is called as the I band, right? So यहाँ से भी from here to here, it is called as the I band. Okay, I band बोलेंगे इसको. And we can say, अब देखिए, from here to here, see, okay, यहाँ देखिए एक्टिन फिलामेंट है जिसको I band बोले. यहां से यहां तक lateral sides of the sarcomere, okay, light filament is there, which is called as the I band. Okay, and बीच में, right, it is the myosin. इसको myosin बता दीजिए. Okay, myosin.
in center myosin is there. अब यहाँ पे देखिए, here actin is overlapping on the myosin. Actin is overlapping on the myosin. Actin is overlapping on the myosin. Simple. It is the light filament. Okay. Comparing these two, it is the dark filament. It is the light filament. But see this overlapping part of the myosin and actin. Overlapping part on the myosin and actin. Overlapping part on the myosin and actin. ये होगा, इससे भी डार्क होगा ये. यहाँ पे दो फिलामेंट्स है, यहाँ पे सिंगल है, ये डार्क है. Okay, it is the dark only. But this one, this overlapped part is still more darker than this one. Okay, so it is the myosin, and this overlapped part is we can call it as the. Okay, इसको क्या बोलेंगे? This is the overlapped part of the actin and myosin. This part is called as the A band. It is called as the A band. This is also called as the A band. Okay, so यहाँ पे तीन properties दिखे. What is lateral sides actin? Okay, light filament. In middle, thick only. Okay, myosin. And the lateral sides of the myosin. Okay, it is overlapped by the actin. So this overlapped part is still more darker than this myosin. So we can say this part is the myosin part. This filament is the myosin, and this overlapped part is called as the thick band. Okay, so क्या बोलेंगे इसको? ये band is called as the thick band. कितने bands हैं इसमें? I band and the A band. Okay, so क्या है यहाँ पे? दिस आई बैंड, ये लाइट है, लाइट कलर्ड. कंपेयरिंग टू दिस वन, इट इज द लाइट कलर्ड, सो इट इज कॉल्ड एज द लाइट बैंड. इट इज कॉल्ड एज द लाइट बैंड. ओके, एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज द आइसोट्रोपिक बैंड. क्या बोलेंगे इसको? आइसोट्रोपिक बैंड. ओके, एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज द थिन बैंड. बिकॉज ऑफ थिन है, कंपेयरिंग ये इसको कंपेयर करेंगे तो ये थिन होगा, ये थिक होगा. ओके, दैट्स नॉट लाइक दैट. एक्टिन पार्ट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलेंगे उसको? लाइट बैंड बोलेंगे. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द आइसोट्रोपिक बैंड बोलेंगे. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द थिन बैंड. नाउ सी, ओके, दिस पीस वेयर द एक्टिन इज ओवरलैपिंग ऑन द myosin. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द A band. This A band also called as the thick band. It is called as the thick band. Then after that, this also called as the anisotropic band. It is called as the anisotropic band. And these also called as the thick band. Okay, so दोनों टाइप के बैंड्स, दोनों टाइप के फिलामेंट्स है. वन इज द लाइट फिलामेंट एंड द सेकेंड वन विल बी द डार्क फिलामेंट. ओके, दिस आल्सो कॉल्ड एज द डार्क बैंड. ओके, कैसे दिए नाम से? ये नेम्स कैसे दिए? दीज आर गिवन बाय द अपीयरेंस ऑफ इट्स थिकनेस. ओके, जो लैटरल साइड में है आई बैंड. Okay, it is a light in color comparing to this one, so it is called as the light band or the thin band. अब ये देखिए, okay, so this one is the overlapping part is darker than this myosin. Okay, ये भी thick है, but ये this part ये overlap हुआ तो इसका thickness इससे ज्यादा रहेगा, और इसका thickness इससे ज्यादा होगा, इसका thickness इससे ज्यादा होगा, इसका thickness इससे ज्यादा होगा. So myosin is a thick only. But this overlapped part is still more darker than the thicker than the myosin. That's why this overlapped part is called as the A band. That A band also called as the dark band. Okay, dark band. So ये है I band and the A band. Two types of the proteins are there. Okay, one is the actin, one is the myosin. Okay, actin को क्या बोले? We can say actin is the light band. Okay, and this one, okay, overlapped part of the actin and myosin is called as the thick band or the dark band. Now see, some space is there
बिटवीन द टू मायोसिन्स। ओके, इसके नीचे क्या होगा, और एक मायोसिन होगा, उसके नीचे मायोसिन, साइड्स में एक्टिन, इसके ऊपर भी स्टेप बाय स्टेप मायोसिन होंगे, साइड्स में एक्टिन होगा। ओके, सो अब देखिए, अब यहाँ पे मानिए यहाँ पे एक मायोसिन है, राइट। सो ये मायोसिन के बीच में जो स्पेस है, एंड ये मायोसिन इन दोनों के बीच में स्पेस है, एंड स्पेस बिटवीन द दीज टू मायोसिन्स। ओके, सो some space is there between the myosins. That space between the myosin is called as the H zone. क्या बोलेंगे इसको? This is a space. Okay, the space between the myosin is called as the H zone. H zone क्या है? H zone, it is the space between two myosins. Okay, space between the two myosins is called as the H zone. So इसको क्या बताएंगे यहाँ पे? This space between the myosins is called as the H zone. H zone ये है स्ट्रक्चर। अब देखिए, simply during the muscle contraction, okay, during the muscle contraction, this Z line, okay, this Z line move forward, and this Z line will move forward. ओके, क्या होगा यहाँ पे? मसल कंट्रैक्शन में क्या होगा? ओके, दोनों जेड लाइन्स ओके फॉरवर्ड मूव होंगे। दिस विल बी मूव फॉरवर्ड। कहां पे आएंगे? इनटू दिस H जोन। ओके, तो मसल कंट्रैक्शन होगा, ओके, मसल का कंट्रैक्शन होगा, दिस टोटली जेड लाइन, ओके, इंक्लूडिंग विद द एक्टिन, ओके, दिस जेड लाइन विल बी मूव फॉरवर्ड लाइक दिस। ओके, टोटली सी ये क्या है? जेड लाइन है ये, राइट। देखिए यहाँ पे दीज ओके, दिस जेड लाइन विल बी मूव फॉरवर्ड एंड कम्स इनटू द H जोन। H जोन में आएगा ये मूव फॉरवर्ड हो गया, एंड दीज जेड लाइन भी, और ये जेड लाइन भी मूव फॉरवर्ड हो गए, दैट आल्सो कम्स इनटू द मिडिल ऑफ द H जोन। अब देखिए दोनों H जोन्स, ओके, दोनों जेड लाइन्स मसल कंट्रैक्शन में मूव फॉरवर्ड होके, लाइक दिस विल बी कम्स ओके इन द मिडिल ऑफ द H जोन। ओके, H जोन में आगे ठहर जाएंगे। सो क्या होगा यहाँ पे? दोनों H जोन में आगे ठहरने से, ओके, दोनों के H जोन में आगे ठहरने से, लाइक इमेजिनरी लाइन विल बी फॉर्म, ओके, इन द सेंटर ऑफ द H जोन, राइट। ये भी यहां तक आ गया और ये भी यहां तक आ गया। इन दोनों मिलने से H जोन में एक इमेजिनरी लाइन का फॉर्म होगा। दैट इमेजिनरी लाइन, ओके, इन द H साइड, दैट इज विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मसल कंट्रैक्शन, इज कॉल्ड एज द M लाइन। क्या बोलेंगे उसको? M लाइन। क्या है ये M लाइन? इट इज द इमेजिनरी लाइन। It is the imaginary line of कौन सा? टू जेड लाइन्स। ओके, इट इज ए इमेजिनरी लाइन। कब फॉर्म होगा ये? दिस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्शन में, राइट, दोनों जेड लाइन्स मूव फॉरवर्ड होने से इन द सेंटर ऑफ द H जोन, ओके, इन द सेंटर ऑफ द H जोन, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन का फॉर्म होगा। दैट इमेजिनरी लाइन वी कैन कॉल एज द M लाइन बोलेंगे इसको। ओके, ऐसे सेंटर ऑफ द H जोन में वन इमेजिनरी लाइन विल बी फॉर्म। दिस इमेजिनरी लाइन इज वी कैन कॉल एज द, क्या बोलेंगे उसको? इट इज कॉल्ड एज द M लाइन। इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एज द M लाइन। कब फॉर्म होगा इमेजिनरी लाइन? दैट विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन। सो मसल कंट्रैक्शन में यहां पे क्वेश्चन आएगा, मसल कंट्रैक्शन में मूव होने वाले फिलामेंट्स कौन से हैं, अनस्टेबल रहने वाले फिलामेंट कौन से हैं? कौन से हो गए? ओनली द एक्टिन फिलामेंट विथ द जेड लाइन इज मूव। ओके, ये कंट्रैक्शन में फॉरवर्ड मूव होगा, राइट, एंड रिलैक्सेशन में बैकवर्ड मूव होगा। ये भी सेम, कंट्रैक्शन में फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, रिलैक्सेशन में बैकवर्ड मूवमेंट होगा। सो यहाँ पे स्टेबल रहने वाला, ओके, मायोसिन एंड मूवमेंट करने वाला एक्टिन फिलामेंट। सो यहाँ पे साइजेस किसके ज्यादा कम होंगे? ओके, साइजेस विल बी फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द मसल कंट्रैक्शन इज एक्टिन फिलामेंट।
but the length of the myosin is not going to be changed in the muscle contraction. किसका लेंथ चेंज होगा? एक्टिन का लेंथ चेंज होगा, राइट? सो यहाँ पे जो यम लाइन का फॉर्मेशन हुआ है, that yum line also called as the Krauser membrane. Okay, it is also called as the Krauser membrane. It is called as the Krauser's membrane. यम लाइन को Krauser's membrane भी बोलेंगे. Okay, and this Krauser's membrane also called as the Dobbe's line. Called as the Dobbe's line. So क्या है? It is the structure of the myofibril. Okay, myofibril. क्या होगा myofibril में? On the myofibril, on the successive distances, okay, longitudinal lines are there. These longitudinal lines are called as the Z line, right? And the space between the Z lines is called as the, क्या बोलेंगे उसको? Sarcomere. And the sarcomere, two types of the filaments are there. One is located in the center of the sarcomere, which is thick in nature. That is we can call as the myosin filament. And on the lateral sides of the, okay, this is sarcomere, some light colored filament is there, which is called as the actin filament, right? And in the center of the sarcomere, some of the actin is overlapping on the lateral parts of the myosin. Okay, here and here, both the sides. Okay, some of the actin filament overlapping on the myosin. Okay, this myosin and the actin combinated part is darker than the myosin. That's what this part is called as the A band or the dark band, and this will be called as the thin band. Okay, and space between the myosin is called as the, क्या बोलेंगे उसको? H zone बोलेंगे. Okay, H zone. And during the muscle contraction, on the H zone, an imaginary line will be formed. That line is called as the imaginary line is called as the yum line. Okay, so here in this session, right, we had a discussion on the muscle, okay, and properties of the muscle, structure of the muscle, and myofibril. In next video, we will going to discuss about the structures of the actin and the structure of the myosin filaments. Thank you.